पेश है आपका चहीता BS6 DOST प्लस आधुनिक IGEN6 टेक्नोलॉजी के साथ। DOST प्लस के साथ पाइए 6 कदम जो दे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। पाइए ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और टॉर्क, ज्यादा पेलोड, ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा भरोसा। DOST प्लस में पाइए ज्यादा टेक्नोलॉजी का फायदा, अत्याधुनिक BS6 टेक्नोलॉजी, IGEN6, ज्यादा ग्रीन, ज्यादा क्लीन, और तो और इसमें एड ब्लू की भी जरूरत नहीं पड़ती, ताकि आपको मिले सुपीरियर परफॉर्मेंस और प्रॉफिट, खासकर इंडियन रोड कंडीशंस में भी। DOST प्लस में पाइए ज्यादा माइलेज का फायदा। IGEN6 टेक्नोलॉजी वाला P15 इंजन दे ज्यादा माइलेज, कम से कम 10% ज्यादा माइलेज, ताकि आपको मिले ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा डीजल की बचत के साथ। DOST प्लस में पाइए ज्यादा पावर और टॉर्क का फायदा। DOST प्लस में है बेस्ट इन क्लास 80 HP और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो देता है आपको ज्यादा से ज्यादा पावर, ताकि आप कर सकें ज्यादा ट्रिप कम समय में। DOST प्लस में पाइए ज्यादा पेलोड का फायदा, 1500 किलो का पासिंग, अब ज्यादा बड़ी लोड बॉडी 8 फीट 7 इंच, 15 इंच के ज्यादा बड़े टायर और ज्यादा लीफ स्प्रिंग्स के साथ आप ज्यादा लोड उठा सकते हैं। ज्यादा प्रॉफिट के लिए DOST प्लस में पाइए ज्यादा कंफर्ट का फायदा, फैक्ट्री फिटेड AC, पावर स्टीयरिंग और आलीशान केबिन के साथ। बिना थके, बिना रुके चलाइए अपना DOST प्लस लंबे ट्रिप के लिए और पाइए ज्यादा भरोसा। DOST प्लस आता है 3 साल या 1 लाख किलोमीटर के वारंटी के साथ, ताकि आप रहें टेंशन फ्री। साथ ही DOST प्लस का मेंटेनेंस बहुत सस्ता होता है। DOST प्लस में सिर्फ 4.4 लीटर इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है। BS6 DOST प्लस से पाइए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। दोस्ती का वादा, कमाई और भी ज्यादा।
distinguished by its ability to handle a diverse range of vehicles in record turnaround times. This is one of Ashok Leyland's most versatile plants and winner of the Deming Award for Excellence. This is Hosur 2. Established in 1994, Hosur 2 is Ashok Leyland's third plant. From its early days, a unit designed for versatility. The uniqueness of Hosur 2 is this is probably the only commercial vehicle manufacturer producing such a wide range starting from 2.5 tons to 49 tons, all in one umbrella. Hosur 2 was the answer to a market that demanded small volume, high diversity, and a quick turnaround of vehicles. The plant has invested in some remarkable quality control processes, in-house skill training setups, and the latest in automation to deliver world-class products in record time. It can do from a small cabin which is fixed into an LCV for the DOST cabins, and also into very large cabins which are used for defense and for our 49 tonners. Hosur 2 has 4 assembly lines, each specialized for different categories of vehicles. The plant is capable of producing more than 450 vehicles a day and close to 700 model variants. Hosur 2 has the privilege of serving the Indian Army by producing some of the toughest and most reliable vehicles that work in our remote borders. The rigorous quality control required for these products stands testimony to the capabilities of this plant. To stay nimble in this fast-evolving market, the plant has invested in the latest in automation and robotics. People are the most valuable assets to any institution. The Hosur 2 plant has built its human resources from within its neighborhood. The Skill Development Center trains ITI graduates, providing industry-ready skill sets that empower the young workforce. The versatility of the Hosur 2 plant goes beyond its manufacturing capabilities. Attention to the natural environment is a very important component of its holistic approach. The plant is dedicated to developing green pockets of afforested land and facilities for rainwater harvesting. This is among the greenest of all the Ashok Leyland plants. The role of H2 in meeting the company vision to be flexible, meet the wide product range with operational excellence has been driven through the TQM culture across the unit. For its excellence in total quality management, the plant was awarded the Deming Prize in 2017. This is the second Ashok Leyland plant to achieve this honor. It has now grown to be a very significant plant, so it is of strategic importance for our future. This will continue to remain as a most flexible plant, which will give you a complete range from a small sub 2 tonner to a 49 tonner goods range of vehicle, but focused on goods. Hosur 2 is strategically designed to stay nimble in a fast-evolving market. Its diverse capabilities, award-winning quality control processes, and a futuristic outlook make it one of the most versatile plants of Ashok Leyland. कब आएगा आपकी जी हमारी जी एक हलचल हलचल दिल में है, नजरों में है नादानी, मासूम चेहरे पे है एक मीठी सी ये हैरानी। एक हलचल हलचल दिल में है, नजरों में है नादानी, मासूम चेहरे पे है एक मीठी सी ये हैरानी। नई मंजिलों की तरफ चल पड़े हम, संग लेके जाएंगे हर याद पुरानी।
सफर के हम सफर, हर एक सफर के हम सफर, गाते चले ये गीत। आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत। हर एक सफर के हम सफर, हर एक सफर के हम सफर, गाते चले ये गीत। आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत, आपकी जीत हमारी जीत। सालों से हम इस देश को प्रगति की ओर बढ़ाते आ रहे हैं। 70 साल से हमारी एक ही रीत, आपकी जीत हमारी जीत। Set up in 1980, this is Ashok Leyland's second plant and its first aggregation unit. Today, it is a center of excellence for engines. This is Ashok Leyland's Hosur 1 plant. Over the last 4 decades, Hosur 1 has evolved from being an engine and chassis plant to becoming a specialist in engine assembly. An entire ecosystem of facilities has grown around it, making it a comprehensive and world-class engine manufacturing unit. Hosur Unit 1 is an engine intensive plant. The key manufacturing facilities are basically the machining of engine components, assembly and then the testing of engines. We have a 2-cylinder engine, we have a 3-cylinder engine, a 4-cylinder engine and a 6-cylinder engine. And Hosur 1 can make from H2 to H6, the complete range of engines it can make. To handle the diverse range of engines required for various market segments, Hosur 1 has multiple assembly lines, each with its customized processes. Every day, more than 570 engines are produced under 3 different power and size classes, making this one of the most versatile engine manufacturing units in the country. Hosur 1 has an innovative pick-to-light system that automates and streamlines the process of identifying the correct parts required to feed the assembly line. This matrix-based model has state-of-the-art software and hardware integration, saving valuable time in inventory management. Hosur 1 goes beyond just making engines for automobiles. It manufactures a range of engines for Ashok Leyland's Power Solutions business. The Hosur 1 plant has diversified its capabilities by setting up a dedicated engine recon center, can take an old engine and transform it to a fully functional and roadworthy component. This reconditioning service has rapidly grown into a popular vertical that echoes Ashok Leyland's customer-centric approach to manufacturing. To keep pace with the rapid growth in the commercial vehicle sector, an engine development center is located within its premises. This facilitates an easy and immediate interface between the development and the manufacturing teams, resulting in the quick responses to the evolving market requirements in engine technology. With high levels of automation in the plant, Hosur 1 has invested in an electronics service lab with exceptionally trained personnel. This in-house servicing capability ensures trouble-free functioning of the automated production lines and dramatically reduces production downtimes. Hosur 1 has a dedicated skill development center focused around engine manufacturing.
This is one of the very few centers in the country where young graduates are trained in precision skill sets and dexterity, an essential requirement for the intricate workmanship required in engine manufacturing. Hosur 1 has an in-house warehousing facility where spares for all the plants are aggregated at one central point. The warehouse also serves as the distribution point for the online sales of Ashok Leyland's spare parts business. The engines manufactured in Hosur 1 power more than 1 million Ashok Leyland vehicles. Through its highly skilled human resources, robust manufacturing processes, and comprehensive in-house facilities, Hosur 1 has the framework to stay nimble in a fast-evolving market for world-class engines. बस है डाल रही है तेरा वैसे ही रहा Open. No. आता डोर के पास The well-diversified Hinduja Group, with over a century-old legacy, transnational presence, multi-billion-dollar turnover, and employing over 150,000 employees, wants to be the bridge for nations and companies to achieve their sustainability targets. This led to the setting up of Hinduja Renewables in 2016, with a mission to positively impact humanity and conserve the environment through sustainable energy and mobility solutions. In May 2020, Hinduja Renewables embarked on this remarkable journey to set up an ultra-modern 75-megawatt peak solar power plant in the state of Tamil Nadu through its subsidiary Prathama Solar Connect Energy. The objectives of the project were twofold: to enable Ashok Leyland to optimize its energy cost and to significantly reduce the automaker's carbon footprint, thereby helping it achieve its sustainability goals. The journey started with site selection at Vepankulam village in the Sivagangai district. This was followed by extensive site preparation and reverence of the land for an auspicious beginning. Considering the sun's positioning and the region's topography, the project used a fixed tilt mounting arrangement for peak energy production. High-efficiency monocrystalline PERC modules were sourced from Jinko Solar, a leading solar panel manufacturer. For optimum conversion of power, smart PV string inverters were installed.
The plant was equipped with control software applications integrated with data acquisition and hardware to offer intuitive visualization and real-time analysis of project parameters. To effectively manage both construction quality and project timelines, drones were used to relay back real-time images of the various phases of construction. Our engineers would overlay these images on design blueprints to validate construction at every stage. The aerial images also gave our clients and stakeholders a bird's-eye view to track project progress. In line with Hinduja Group's Water Positive initiative, the company opted for a robotic cleaning solution for regular cleaning of solar modules. This innovative methodology is estimated to conserve 9 million liters of water annually. The journey was not without challenges, including the global pandemic that brought the world to a standstill. Nonetheless, our on-ground team showed great deftness to overcome every impediment faced. Stringent health and safety norms were rigorously followed, the end result being 0 incidents of COVID-19 and no loss of productivity in implementation due to the pandemic. And while the globe trudged its way back to normalcy, the team was able to complete the project well within the stipulated timeline. Today, this is one of the largest group captive solar projects for a single client in India. The clean energy generated at the plant will cater to all sites of Ashok Leyland across Tamil Nadu. More importantly, the captive solar power plant will ensure abatement of 85,000 tons of carbon annually. The company has deployed preventive and predictive maintenance systems to ensure best-in-class capacity utilization factor during the plant's entire life cycle. While the dual objective that the project had set out to achieve has been met, the journey for the company continues. The project generated over 500 direct jobs during the development phase and will further create 20+ permanent jobs for plant operations. In partnership with the Hinduja Foundation, Hinduja Renewables is implementing a slew of socio-economic measures for the upliftment of communities surrounding the solar power plant. The project underlines the commitment of Hinduja Renewables to help its clients achieve their sustainability targets and improve the environment for generations to come. നിത്യാനന്ദ ക്ഷേണായി ശരിക്കും അറിയാമല്ലോ ചന്ദ്രഭാനുവിനെ അയാളെ ചതിക്ക് ചതിയല്ല അയാളുടെ വഴി ചാവാ. For over 70 years, we have been at the forefront of innovation. And today, that journey of innovation has become a revolution. Introducing Ashok Leyland Avatar, India's first and only modular truck platform. 450 engineers, 4 million man-hours, 6 million kilometers of testing across different terrains. One revolutionary truck platform. The Avatar range with IGEN6 Technology is customized and tailored to your exact needs, giving you choice like never before. Your power to choose is spread across the entire range of configurations, from 18.5 to 55 tons. Building your truck starts with understanding your requirements. Every aspect of your truck is customized just the way you want it. So let's get going. Your choice of application, be it mining, construction, e-commerce deliveries, cement transportation, and lots more. Your choice of load and the type of road, so we can ensure there are no. 7 है
टैंकर है, ट्रैक्टर है। ने 2.5 महीने पहले अशोक लेलैंड का अवतार 19-20 8.5 मीटर का टिप्पर खरीदा है। నా పేరు చాడ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి. 2 వెహికల్స్ వచ్చి 12 టైర్స్ BS6 వెహికల్స్ రీసెంట్ గా తీసుకున్నాం. ఈ బండ్లతో నుంచి है और दूसरा जो है IPU क्लच असेंबली जिसमें काफी स्मूथ एंगेजमेंट रहता है। BS6 में अगर अपन ड्राइवर कंफर्ट की बात करें तो उसमें 2 चीजें ऐसी है नई दी गई। क्लच IPU एक तो है, दूसरा है गियर में जो केबल शिफ्ट मैकेनिज्म दिया गया है उसकी वजह से ड्राइवर को थकान बहुत कम लगती है और जो मेरा एवरेज 20 से 22 चक्कर का था लोकल में वो ऑलमोस्ट 24 से 25 हो जाएगा ही। அது இன்னொரு ஃபியூச்சர் டிரைவருங்க கீர் ஷிஃப்ட் பண்ணவங்க ராங்கா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது அட்வைஸ் பண்ற ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. அது நமக்கு ரொம்ப பெட்டர்னு வச்சுக்கிறேன். இன்னொன்று டிரைவருங்களுக்கே வந்து டேஷ்போர்ட்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கீர் சேஞ்ச் பண்ணணும், மற்ற எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே வந்து ஒரு காரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं पिछले 8 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पहले मैं BS4 चलाया था, अभी 1 महीना से BS6 चला रहा हूँ। ये BS4 से BS6 बहुत अच्छी लग रही है। पहले BS4 में 2 पेंडल में प्रेशर ये डाउन हो जा रहा था, BS6 में जो ऐसे 4 पेंडल में भी डाउन नहीं होती है। स्टीयरिंग फ्री है, ब्रेक भी अच्छा लग रही है, गियर भी अच्छा है। ये गाड़ी BS6 चलाने में बहुत मतलब कि हल्की लगती है। मेरा नाम इसराफिल अंसारी है। मैं पिछले 7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। पहले BS4 चलाता था, अभी BS6 1 महीने चला रहा हूँ। ये गाड़ी हर चीज़ में अच्छा लगता है चलाने में। इसका ब्रेक अच्छा है, स्टीयरिंग अच्छा है, गियर आराम से लगता है और इसका ब्रेक मारने के बाद में हवा नहीं निकलती है। मेरा नाम महेंद्र विकापुली है। मैं त्रिमूर्तिकृष्ण स्टोर पर गाड़ी चलाता हूँ। मैं पिछले 11 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे मालिक ने 2.5 महीने पहले ये गाड़ी ली है, तब से ये गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। इस गाड़ी का गियर वो सॉफ्ट है। कैबिन होने से सेफ्टी ज़्यादा है और कैबिन में भी बहुत जगह है। ఈ డ్రైవర్కి వచ్చి కూడా ఆ గేరు కేబుల్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి డ్రైవర్కు అలసట లేకుండా బాగుంది, బ్రహ్మాండంగా కంఫర్టబుల్ ఉంది. சேஃப்டியை பொறுத்தளவுக்கு BS4 BS6 ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க ஃபைபரு அந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இப்போ மெட்டல் போட்டதால சேஃப்டி நல்லா இருக்கு. ஹெட்லைட் முதல்ல சிங்கிள் ஹெட்லைட் வந்து இப்போ டபுள் ஹெட்லைட் ஆகிட்டாங்க. 2 टन से 55 टन कैपेसिटी के जो अवतार प्लेटफॉर्म है जिसमें ज्यादातर पार्ट्स कॉमन होने की वजह से हमारे बिजनेस में काफी बेनिफिट है। तो मैंने BS4 से अशोक लेलैंड में स्टार्ट किया था। उसने मेरे को 2.5-3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। उससे प्रेरित होके मैं BS6 भी रिपीट परचेस 10 गाड़ी ऑलरेडी मैंने अशोक लेलैंड का लिया हुआ है और आगे सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप भी ये गाड़ी लीजिए। बहुत फायदेकारक ये गाड़ी है और मैं पर्सनली इसका अनुभव कर चुका हूँ। 15 ఇయర్స్ నుంచి అశోక్ లేలాండ్ వెహికల్స్ ని వాడుతున్నాం, సంతోషంగా ఉన్నాం. మీ విజయమే మా విజయం. अंकल वो आपके पास प्लायर होगा क्या? हाँ बेटा जी, अभी लाया। लाओ अंकल जी, मिल गया? वो ये बाद में हो जाएगा बेटा जी, पहले इफ्तारी कर लो। अशोक लेलैंड ने अपने ग्राहकों को एक बेमिसाल ट्रकिंग अनुभव देकर भारत के शीर्ष वाहन निर्माता के रूप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है
और हम एक बार फिर से हाजिर हैं ढेरों खूबियों से भरपूर अपने नए सीएनजी आईसीवी ट्रक लेकर, जो हमारे ग्राहकों का मुनाफा बढ़ाने में मदद करेंगे। पेश है इकोमेस्टार 1615 HE CNG। बेहतरीन IGEN6 मिड-नॉक्स तकनीक वाले अपने जांचे परखे H4 इंजन के भरोसे हम अपने ग्राहकों को इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ माइलेज का आश्वासन देते हैं, ताकि एक बार सिलेंडर भरवाकर आप ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाएं। ये नई श्रृंखला सीएनजी टैंक क्षमता के अनेकों विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिसमें लगा है इस इंडस्ट्री का पहला 240 लीटर का सिंगल सिलेंडर, और साथ ही कई नए सुधारों के माध्यम से ट्रक ग्राहकों को बेहतर मूल्य भी प्रदान करते हैं। नए इकोमेस्टार 1615 HE CNG ट्रक में सुरक्षा, आसान मरम्मत और बेहतर बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए सामने की ओर पूरा स्टील का फेशिया दिया गया है। नए शक्तिशाली और दोगुनी रोशनी वाले हेडलैम्प रात में ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी को बेहतर बनाकर ट्रिप टाइम कम करने में मदद करते हैं। H4 CNG इंजन इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर 144 हॉर्स पावर और टॉर्क 450 न्यूटन मीटर देता है। ये डीजल इंजन के समान बेहतरीन पिकअप और शानदार प्रदर्शन देता है। साधारण सीएनजी एग्जॉस्ट सिस्टम चले सालों साल बिना किसी रखरखाव, DEF और फिल्टर की आवश्यकता के। हम 90 लीटर से 240 लीटर के कैपेसिटी के सिलेंडरों की पूरी रेंज प्रदान करते हैं, जो मॉड्यूलर पोजीशनिंग के साथ हर प्रकार के सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सिलेंडर कैपेसिटी का चुनाव कर सकते हैं। हाईवे या सिटी फिलिंग आवश्यकता के अनुसार धीमी फिलिंग और फास्ट फिलिंग के लिए इसमें दिया गया है ड्यूअल फिलिंग नोजल। एक एकल एकीकृत इकाई में ही दिए गए हैं यूनिट फिलिंग वाल्व, प्रेशर गेज, शट ऑफ वाल्व, फिल्टर और माइक्रो स्विच। प्रत्येक सिलेंडर के लिए मैनुअल सिलेंडर वाल्व प्रदान किया जाता है, जिसके बर्स्ट डिस्क और अतिरिक्त प्रवाह ब्लॉक हाई प्रेशर फिलिंग और आग लगने की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान। प्रेशर फिलिंग और आग सुरक्षा के लिए इग्निशन कट ऑफ स्विच सीएनजी फिलिंग के दौरान वाहन को स्टार्ट होने से रोकता है। स्वेज लॉक फिटिंग प्रदान करती है उत्कृष्ट गैस टाइट सीलिंग, ट्यूब ग्रिपिंग, लीक प्रूफ ऑपरेशन, ट्यूब ग्रिपिंग। इनमें लगे हैं हाई सेफ्टी रेटिंग वाले एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, लीक टाइट जॉइंट के साथ जंग रोधी स्टेनलेस स्टील पाइप, हाई प्रेशर पार्टिकुलेट फिल्टर सीएनजी में मौजूद गंदगी के कणों को इंजन में प्रवेश होने से बचाता है। ये एक जंग प्रतिरोधी एल्यूमीनियम ढांचे से बना होता है। फिल्टर बदलना और ड्रेन करना भी बहुत आसान है। लोड बॉडी के आगे और पीछे लगी वेंट लाइनें सीएनजी को बाहर रिलीज कर दुर्घटना से बचाव करती हैं। सिंगल शट ऑफ वाल्व से इंजन में सीएनजी की पूरी सप्लाई को बंद किया जा सकता है। यह स्विच आपात स्थितियों के दौरान सीएनजी आपूर्ति को बंद करने के लिए उपयोगी होता है। हम चाहते हैं आपका ट्रक ज्यादा माल ले जाए। यही कारण है